Hello, my dear comrades. Let's get started and continue with our grammar topic parts of speech in an easy, innovative and interesting way and retain it forever. Hey guys, no need to memorize. You just got to listen and understand and you'll never forget it in your life. So let's embark on a journey to learn English grammar together. Our today's grammar topic is parts of speech और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इजी है। आपको ग्रामर की कोई भी टॉपिक बिल्कुल भी रटने या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है और आप इस टॉपिक को चुटकियों में समझ जाएंगे। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच एंड दैट आर वर्ब्स। अभी हम थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने दो पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन्स और प्रोनाउंस कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने अब तक वो दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उन वीडियोस को देखिए ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग और टॉपिक के बारे में क्लैरिटी मिले। उन दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हाँ, आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्लेलिस्ट में भी जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। Before starting our topic, let me tell you that we are going to cover our topic in 3 parts और इससे आप टॉपिक को बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। First, we are going to understand the topic, then we will review the topic with examples and finally practice the topic with the help of exercises. तो चलिए शुरू करते हैं our third part of speech and that are verbs. So let's get started. आप सोच तो जरूर रहे होंगे ना कि verbs किसे कहते हैं, तो देर किस बात की है, जान लेते हैं verbs के बारे में। Now let's read few sentences about Meera. Meera treats the poor and sick. She is a renowned doctor. She has a kind and loving heart. अगर हम बात करें हमारे फर्स्ट सेंटेंस मीरा ट्रीट्स द पुअर एंड सिक की, तो हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस मीरा के बारे में है और वो क्या करती है। क्या आप बता सकते हैं कि इस सेंटेंस में वो कौन सा वर्ड है जिसे हमें पता चलता है कि मीरा क्या करती है? क्या वो वर्ड पुअर है, सिक है या फिर ट्रीट्स है? यस, यू आर करेक्ट। हमें ट्रीट्स वर्ड से पता चलता है कि मीरा क्या करती है और वी कैन से ट्रीट्स इज द वर्ड दैट टेल्स अस अबाउट द एक्शन ऑफ मीरा। अगर हम बात करें हमारे सेकंड सेंटेंस शी इज अ रिनाउंड डॉक्टर की, तो हमें पता चलता है कि मीरा कौन है। क्या आप बता सकते हैं कि इस सेंटेंस में वो कौन सा वर्ड है जिसे हमें पता चलता है कि मीरा कौन है? क्या वो वर्ड रिनाउंड है, डॉक्टर है, इज है या फिर अ है? और हाँ, हमें इज वर्ड से पता चलता है कि मीरा कौन है और वी कैन से is the word that tells us about the state of being of मीरा। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड सेंटेंस she has a kind and loving heart की, तो हमें पता चलता है कि मीरा के पास क्या है। क्या आप बता सकते हैं कि इस सेंटेंस में वो कौन सा वर्ड है जिसे हमें पता चलता है कि मीरा के पास क्या है? क्या वो वर्ड काइंड है, लविंग है, हार्ट है या फिर हैज है? यस, यू आर करेक्ट। हमें हैज वर्ड से पता चलता है कि मीरा के पास क्या है और वी कैन से हैज इज द वर्ड दैट टेल्स अस व्हाट इज पोजेस्ड बाय मीरा। तो दोस्तों, हमें ये तीनों वर्ड्स ट्रीट्स, इज एंड हैज से पता चलता है कि मीरा क्या करती है, मीरा कौन है और मीरा के पास क्या है।
और इन्हीं वर्ड्स को तो हम verbs कहते हैं। So let's check out for the definition of a third part of speech, and that are verbs. Verbs are words that tell us about the action of Meera, the state of being of Meera, or what is possessed by Meera. और हाँ, अगर हम verbs के universal definition की बात करें तो हमें मीरा को subject word से replace करना होगा और हमारे verbs की definition होगी। So let's check out for the universal definition of verbs. Verbs are words that tell us about the action of the subject, the state of being of the subject, or what is possessed by the subject. अब क्या आपको पता है subject किसे कहते हैं? सब्जेक्ट एक सेंटेंस में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है और सब्जेक्ट ही हमें बताता है कि ये सेंटेंस किसके बारे में है। जैसे कि हमने देखा कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस मीरा के बारे में है तो मीरा हमारी सब्जेक्ट है जो कि एक नाउन है। हमारा सेकंड और थर्ड सेंटेंस भी मीरा के बारे में है, लेकिन यहाँ पर हमने मीरा को प्रोनाउन शी से रिप्लेस कर दिया है। तो इन सेंटेंसेस में शी हमारा सब्जेक्ट है जो कि एक प्रोनाउन है। तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। अभी हमने तीनों सेंटेंसेस में देखा कि हमारा सब्जेक्ट है नाउन मीरा एंड प्रोनाउन शी। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार verbs की डेफिनेशन को रिकॉल कर लेते हैं। Verbs are words that tell us about the action of the subject, the state of being of the subject, or what is possessed by the subject. Now we have understood what verbs are. So let's move forward and make our concept stronger by reviewing the topic with the help of examples. Our first example is Ruskin Bond writes interesting stories. So let's together identify the verbs in this sentence. Let us together recall the definition of verbs. Verbs are words that tell us about the action of the subject, the state of being of the subject, or what is possessed by the subject. So we first need to identify the subject in this sentence. तो सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट वो वर्ड होता है जिसके बारे में सेंटेंस होता है और सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है या फिर प्रोनाउन भी। सो इन दिस एग्जाम्पल वी कैन सी दैट अ सेंटेंस इज अबाउट रस्किन बॉन्ड एंड सिंस रस्किन बॉन्ड इज अ नाउन, so in this sentence Ruskin Bond is a subject. Since we have successfully identified our subject, now let's together identify the verb with the help of our subject Ruskin Bond. Now as we already know that verbs tell us about the action of the subject. क्या आप बता सकते हैं कि इस एग्जाम्पल में वो कौन सा वर्ड है जिसे हमें पता चलता है कि रस्किन बॉन्ड क्या करते हैं? क्या वो वर्ड इंटरेस्टिंग है? नो। क्या वो वर्ड स्टोरीज है? अरे नहीं बाबा। क्या वो वर्ड राइट्स है? हाँ, आप बिल्कुल सही हो। राइट्स इज द वर्ड दैट टेल्स अस व्हाट एक्शन आवर सब्जेक्ट रस्किन बॉन्ड डज। सो राइट्स इज द वर्ब इन आवर फर्स्ट एग्जाम्पल Ruskin Bond writes interesting stories. Let's check out for our next example and try to identify the verbs in this sentence. Virat Kohli is an Indian cricketer. So let's quickly tell the definition of verbs. Verbs are words that tell us about the action of the subject, the state of being of the subject, or what is possessed by the subject. So first we need to identify the subject in this sentence. So in this example, we can see that our sentence is about Virat Kohli
And since Virat Kohli is a noun, so in this sentence, Virat Kohli is a subject. Now let's together identify the verb with the help of a subject Virat Kohli. Now as we already know that verbs tells us about the state of being of a subject. क्या आप बता सकते हैं कि इस एग्जाम्पल में वो कौन सा वर्ड है जिसे हमें पता चलता है कि विराट कोहली कौन है? क्या वो वर्ड इंडियन है? नो। क्या वो वर्ड एन है? नो। क्या वो वर्ड क्रिकेटर है? अरे नहीं बाबा नहीं। क्या वो वर्ड इज है? Yes, you are absolutely correct. Is the word that tells us about the state of being of a subject Virat Kohli. So is the verb in our second example. Virat Kohli is an Indian cricketer. Let's check out for our next example and identify the verbs in this sentence. Mr. Sen has a beautiful bungalow. So let's together identify the verbs in this sentence. Let us together quickly recall the definition of verbs. Verbs are words that tell us about the action of the subject, the state of being of the subject, or what is possessed by the subject. So we first need to identify the subject in this sentence. So in this example, we can see that our sentence is about Mr. Sen, and since Mr. Sen is a noun, so in this sentence, Mr. Sen is a subject. Now let's together identify the verb with the help of a subject Mr. Sen. Now as we already know that verbs tell us what is possessed by the subject. क्या आप बता सकते हैं कि इस एग्जाम्पल में वो कौन सा वर्ड है जिसे हमें पता चलता है कि मिस्टर सेन के पास क्या है? क्या वो वर्ड ब्यूटीफुल है? नो, इट इज नॉट करेक्ट. क्या वो बंगलो है? नो, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. क्या वो अ है? अरे नहीं बाबा. क्या वो वर्ड हैज है? और हाँ, यहाँ पर आप बिल्कुल सही हो. हैज इज द वर्ड दैट टेल्स अस what is possessed by a subject Mr. Sen. So has is the verb in a third example. Mr. Sen has a beautiful bungalow. So to identify the verbs in this sentences, हमने बार बार verbs का definition बोला, तो एक तरह से बिना रटे और पढ़े ही हमें तो verbs का definition याद ही हो गया. Since we have understood the topic and reviewed it with examples, let's practice the topic with the help of exercises and check out whether we can solve it or not. After each sentence, I will give you 10 seconds to identify the verbs and then we will together solve it. So our first sentence is Shreya sings melodiously. So 10 seconds are for you to identify the verbs in this sentence, or you can pause your video. So were you able to identify the verb in this sentence? So yes, the correct answer is sings. In this sentence, we can see that Shreya is the subject and the action done by a subject is sings. So sings is the verb in this sentence. Now our second sentence is the old lady was very kind. So another 10 seconds for you. Were you able to solve it? Yes, the correct answer is was. We can see that the old lady is the subject and the word was tells us about the state of being of the subject. So, was is the verb in this sentence. And our last sentence is Ratan Tata has a warm and friendly personality. Now the next 10 seconds are for you. The last one is always an easy one. And yes, the correct answer is has. We can see that Ratan Tata is the subject and the word has tells us
what is possessed by the subject. So, has is the verb in this sentence. I hope all of you all were able to identify the verbs and understood our third part of speech verbs very clearly. This was only a brief explanation of our third part of speech verbs. So stay tuned, the detailed video on our third part of speech verbs will be shared soon. Alright, that's a wrap for today. So what's next? Let's meet with the fourth part of speech, adjectives, in our next video. Don't forget to hit that like button and make sure to subscribe to our channel as it will keep you in loop. Thank you for being part of our channel, English Grammar Academy. See you in the next video. Till then, bye bye. Have a good day.